Good morning, students. In today's lecture, we have started the Kirchhoff law in the school. Now, I am discussing it, Kirchhoff's laws. What are these Kirchhoff laws? These are used to find the current. These laws are used to find current, voltage, and resistance of different elements of a complicated circuit. What do you mean by complicated circuit? Here complicated means here we do not identify whether the combination is series or parallel. We are not sure here which combination is here. So while discussing Kirchhoff law, we will use the point junction. What is junction? ये हम use करेंगे. It is the point in the circuit where the different elements join. Where different elements join. It is a point in a circuit where different elements join. Right? This is basically a point in the circuit which is called as junction. Now there are two laws, Kirchhoff first law and Kirchhoff's second law. First law is based on conservation of charge. Conservation of charge. Right? And it can be applied to both open circuit, can be applied to both open as well as closed circuit, means in which the key is not present, and closed circuit in which the key is closed, right? Open circuit as well as to the closed circuit. Now according to this law, the total current entering, according to this law, according to Kirchhoff first law, the total current entering at a point, is equal to the total current leaving that point. एक point पे जितना current enter कर रहा है, that is called as, ये point A है, suppose I1 is the current entering at this point A, I2 is the current entering at this point, and I3 is the current leaving. So we can say I1 plus I2, total current entering is I1 plus I2 equal to I3. Right? There is one other form for this, that the algebraic sum of currents at a point is 0. What is the algebraic sum of the current? इसमें हम sign convention use करेंगे. Sign convention, the current entering, sign convention used here. Current entering at one point is positive, and the current leaving that point, and current leaving that point is नेगेटिव. ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें कौन सा करंट एंटर कर रहा है, प्लस I1, और ये प्लस I2 एंटर कर रहे हैं और ये लीव कर रहा है. सो यू कैन राइट प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0. तो भी आपका क्या आएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3. दिस इक्वेशन आई हैव रिटन फॉर दिस. Current entering at point A is I1 plus I2 and leaving is minus I3, right? This is Kirchhoff first law. Next is Kirchhoff's second law or Kirchhoff voltage law. Second law is also called as voltage law, and it is based on conservation of energy. What is this? Algebraic, according to this law, algebraic sum of potential difference across the different elements of the circuit
in a closed loop is 0. According to this law, the algebraic sum of potential difference across the different elements of a circuit in a closed loop is 0. ठीक है, that is summation of delta V equal to 0. And it is always applied to the closed loop. Now, how we use the sign convention? Sign convention used for सेकेंड लॉ. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये सपोज करते हैं, एक सर्किट सपोज कर लेते हैं. दिस इज रेजिस्टेंस R1, सेल ऑफ EMF E1, दिस इज रेजिस्टेंस R3, दिस इज रेजिस्टेंस R2 and the cell of EMF E2, right? From this I1 is the current entering और यहाँ से I2 is the current coming, right? This is suppose A, B, C, D, E, F, right? I1 is the current coming from first cell, I2 is the current coming from second cell. So at point B it is I1 plus I2. Student, sign convention apply करने के लिए first you have to assign the direction of current in the circuit. Assign the direction of current in the circuit. अब आपने यहाँ पर क्या करना है? You have to put the sign on. This is negative, this is positive. As we know, current always flows from higher potential to lower. So this is positive, this is negative. Current always flows from higher to lower potential. तो higher potential आपकी current की direction से positive sign, ये negative sign. This is also positive, negative, negative, positive, right? अब आप क्या करेंगे? In this closed loop A, B, E, F. In closed loop A, B, E, F, A, A, B, E, F, A, A, B, E, F, A. अब हम क्या करते हैं? A to B मूव किए, कोई एलिमेंट नहीं है, सेकेंड एलिमेंट आ रहा है आपका. B to E, द एलिमेंट इज R3. तो आप लेंगे प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3. पहला साइन, जो भी हमारे लूप में पहला एलिमेंट आया, फर्स्ट साइन. देन मूव टू E to F. दिस इज माइनस ऑफ E1, माइनस ऑफ E1. ठीक है, पहला साइन. फिर यहाँ पर प्लस I1 इंटू R1 इक्वल टू 0, राइट? इसका पहला साइन पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस. आइदर यू कैन टेक देयर फर्स्ट साइन और यू कैन टेक देयर सेकेंड साइन. अब सेकेंड क्लोज लूप लेते हैं हम. इन द क्लोज लूप बी सी डी ई बी, राइट? अब इसमें अप्लाई करें. बी टू सी कोई एलिमेंट नहीं है, सी टू डी है. पहला नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस I2 इंटू R2. इसका पहला साइन प्लस C2, राइट? D2E कुछ नहीं आएगा. दिस इज माइनस पहला साइन I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने किर्चॉफ सेकेंड लॉ दो लूप्स में लगाया. इज इट राइट? तो आपने बस जो भी लूप, फर्स्ट यू हैव टू असाइन द डायरेक्शन ऑफ current. You have to assign the direction of current according to your own choice. Then you have to put the negative and positive sign. Negative positive sign put करोगे. And then what you have to do after putting the negative sign, you have to either take, you have to choose the closed loop. In that closed loop either you will take the first sign. जैसे हमने A B, पहला साइन यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, फिर नेगेटिव आ रहा था, तो फर्स्ट सबके फर्स्ट साइन लेते हुए चलना है. इन द सेम वे you can take the second sign also. Right, now I'm discussing one question NCERT exam. This question is, in this question, this is 30 ohm resistance, this one is 40 ohm, this one is 1 ohm. It is connected to a 45 volt supply. Then it is connected to here negative, positive 80 volt. Then it is 1 ohm and here it is 20 ohm, right? And suppose you have to find the current in different branches. Current in different branches. So if we say I1 is the current and coming from this cell, I1 is the current coming from this cell. At this point B, it get divided into two parts. I2 move in upward direction and I3 move in downward direction. So I have chosen this. आपको find करना है, find the current in
करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, अब डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आप यहाँ पहले ये I1 करंट हमने यहाँ से लिया, ये सीरीज़ में है तो इसमें I1 ही रहेगा। नाउ आई विल पुट द साइन, करंट इसमें यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, और करंट यहाँ से फ्लो करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब इन द क्लोज लूप A, B, I have three unknowns, so I need three equation to solve this. Okay, before that, at point B, I will apply Kirchhoff first law. क्या है फर्स्ट लॉ? I1 करंट आ रहा है और I2 यहाँ से लीव कर रहा है और I3 यहाँ से लीव कर रहा है। सो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0. So can I write I1 equal to I2 plus I3? Now I will apply this Kirchhoff law in the loop A, B, F, G, A. A, B, F, G, A. तो A, B में कोई एलिमेंट नहीं है, B to F चले, यहाँ नेगेटिव minus 40 into I1, this is minus 1 into I1, this is first sign is here plus 45, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, then it is minus 30 into, इसमें कितना करंट है? I2, इस ब्रांच में कितना करंट है? I2, यहाँ से ये I2 करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज minus 30 into I2, so it become minus 41 I1 प्लस 45 माइनस 30 I2 इक्वल टू 0. तो ये 45 इक्वल टू 41 I1 प्लस 30 इंटू I2. एक इक्वेशन ये है आपकी, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब थ्री इक्वेशन आई नीड, तो थर्ड इक्वेशन के लिए मैं अप्लाई करूँगी B, C, D, F, B में, इन द क्लोज लूप B, C, D, F, A, B to C कोई एलिमेंट नहीं है, C to D पहला सेल आ रहा है विद द नेगेटिव साइन माइनस 80, इसमें सेल में करंट कितना? I3, दिस इज माइनस ऑफ, सॉरी दिस इज प्लस, पहला साइन प्लस 1 इंटू I3, राइट। यहाँ से चले तो इसमें भी करंट I3 होगा, दिस इज प्लस माइनस प्लस 20 इंटू I3, यहाँ से माइनस 45 पहला साइन, फिर यहाँ आएगा पहला साइन प्लस I1 इंटू 1, फिर पहला साइन प्लस 40 इंटू I1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब आप इसे देखो, I1 वाली टर्म को माइनस 80 माइनस 45 कितना हो गया? माइनस 125, दिस इज 21 I3, 41 I1 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आ गया 41 I1 प्लस 21 I3 इज इक्वल टू 125, राइट। अब आप यहाँ पर देखो ये I1 और I2 में है, अब आपको इसे I1 और I2 में चेंज कर लें ताकि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। तो आप क्या करिए, यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए किसकी? I3 की। तो I3 की वैल्यू यहाँ पर जब आप पुट करोगे 21, दिस इज I1 माइनस I2 इक्वल टू 125, राइट। सो इट विल बिकम 41 I1 प्लस 21 I1 माइनस 21 I2 इक्वल टू 125। तो यहाँ से आ गया, दिस इज 62 I1 माइनस 21 I1 इक्वल टू 125, ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपके पास ये I1 I2 की 3 इक्वेशन आ गई, सॉल्व 2 and 3 and you will get I1, I2 and I3, right? So this is all about Kirchhoff law. Okay, thank you.